वेलकम डियर वीवर्स द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन का टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में फिजिक्स के पास टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेड एक्सपीरियंस, अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होंगे और अक्सर क्वेश्चन फिजिक्स के इसी वीडियो से आप लोगों के टेस्ट में आने हैं। इसके अलावा अगर बात करें इंटेलिजेंस के वर्बल और नॉन वर्बल पार्ट की, उसकी वीडियोज़ भी पहले अपलोडेड है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन उन वीडियोज़ का लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट भी और वीडियोज़ भी अपलोड करनी है रिपीटेड एक्सपीरियंस क्वेश्चन वाली, तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड डैश वेव्स। राइट आंसर मैकेनिकल। क्वेश्चन नंबर 1, waves which require any medium for their propagation are called mechanical waves. Question number 2, water waves, sound waves and waves produced on the string and spring are called dash waves. Right answer mechanical. Question number 2, water waves, sound waves and waves produced on the string and spring are called mechanical waves. Question number 3, time taken by a vibrating body to complete one vibration is called, right answer, time period. Question number 3, time taken by a vibrating body to complete one vibration is called time period. Question number 4, frequency is reciprocal of dash. Right answer, time period. Question number 4, frequency is reciprocal of time period. Question number 5, the number of vibrations or cycles of a vibrating body in 1 second is called its dash. Right answer, frequency. Question number 5, the number of vibrations or cycles of a vibrating body in 1 second is called its frequency. Next question number 6, pendulum clock invented by, right answer, Christian Huygens. Question number 6, pendulum clock invented by Christian Huygens. Question number 7, sound travels in the form of dash from one place to another. Right answer, waves. Question number 7, sound travels in the form of waves from one place to another. Question number 8, there are dash categories of waves. Right answer, 2. Question number 8, there are 2 categories of waves. कौन कौन सी हैं? Number 1 mechanical waves, number 2 electromagnetic waves. Next question number 9, all sounds are produced by the dash of objects. Right answer, vibration. Question number 9, all sounds are produced by the vibration of objects. Question number 10, sound is a form of dash. Right answer, energy. Question number 10, sound is a form of energy. Sound is a form of energy. Question number 11, all sounds are produced by the dash of objects. Right answer, vibration. Question number 11, all sounds are produced by the dash of objects. Right answer, vibration. All sounds are produced by the vibration of objects. Next question number 12, unit of intensity of sound is, right answer, watt per square meter, यानी Wm minus 2. Question number 12, unit of intensity of sound is watt per square meter. Right answer at Wm minus 2. Next question number 12, sound waves cannot pass through. Right answer, vacuum. Question number 12, sound waves cannot pass through. Right answer, vacuum. Sound waves cannot pass through vacuum. Next question number 13, speed of sound in liquids is dash times that in gases. Right answer, 5. Question number 13, speed of sound in liquids is 5 times that in gases. Number 14, speed of sound in solids is dash times that in gases. Right answer, 15. Question number 14, speed of sound in solids is 15 times that in gases. यानी ये पूछा जाए अगर स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड में पूछा जाए तो 5 टाइम्स, अगर सॉलिड्स में पूछा जाए तो 15 टाइम्स. ये आप लोगों ने याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज, राइट आंसर, 343 ms minus 1. क्वेश्चन नंबर 15, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज, राइट आंसर, 343 ms minus 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, children can hear sound greater than, right dash, right answer, adults. Question number 16, children can hear sounds greater than adults. adults का मतलब जवान यानी सियाने, जो मतलब है कि जो बच्चों की आवाज़ जो साउंड होती है वो ज़्यादा होती है निस्बत adults के. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ह्यूमन ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज लाइज बिटवीन, राइट आंसर, 20 Hz to 20,000 Hz. क्वेश्चन नंबर 17, ह्यूमन ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज लाइज बिटवीन, right answer, 20 Hz to 20,000 Hz. Next question 18, a spherical mirror whose inner curved surface is reflecting is called dash mirror. Right answer, concave mirror. Question number 18, a spherical mirror whose inner curved surface in reflecting is called
concave mirror. Next question number 19. A spherical mirror whose outer curved surface is reflecting is called dash mirror. Right answer, convex mirror. Question number 19. A spherical mirror whose outer surface is reflecting is called convex mirror. यानी इस दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि इनर कर्व्ड सरफेस तो आप लोगों का जवाब होगा कनकेव। यानी आप लोगों ने याद करना, इनर का पूछा जाए, इनर कर्व्ड सरफेस पूछा जाए तो कनकेव। अगर इसी क्वेश्चन में आउटर कर्व्ड सरफेस पूछा जाए तो आप लोगों का जवाब होगा कन्वेक्स। ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। राइट आंसर, प्रिंसिपल एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 20, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ curvature and pole of the spherical mirror is called. Right answer, principal axis. Next question 21. After reflection from a concave mirror, rays of light parallel to the principal axis converge to a point F. This point is called. Right answer, principal focus. 21 number question. After reflection from a concave mirror, rays of light parallel to the principal axis converge to a point F. दिस पॉइंट इज कॉल्ड, यानी जो पॉइंट एफ है वो पॉइंट क्या कहलाता है? राइट आंसर, प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पे, कनकेव मिरर आर आल्सो कॉल्ड डैश मिरर्स। राइट आंसर, कन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 22, कनकेव मिरर्स आर आल्सो कॉल्ड कन्वर्जन मिरर्स। क्वेश्चन नंबर 23, कन्वेक्स मिरर आल्सो कॉल्ड। राइट आंसर, डिवर्जन मिरर्स। क्वेश्चन नंबर 23, कन्वेक्स मिरर्स आर आल्सो कॉल्ड डिवर्जन मिरर्स। तो इन दोनों क्वेश्चन भी आप लोगों ने तजाद रखना है कि अगर कनकेव मिरर का पूछा जाए तो कन्वर्जन, अगर कन्वेक्स मिरर का पूछा जाए तो डिवर्जन। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पे, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड। राइट आंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 24, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड। राइट आंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पे, एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैविंग टू सरफेस ऑफ which at least one is curved is called. Right answer, lens. Question number 25, any transparent materials having two surfaces of which at least one is curved is called. Right answer, lens. Next question 26 number पे, the incident ray, the reflecting ray and the normal are lies in the dash plane. Right answer, same. Question number 26, the incident ray, the reflecting ray and the normal are all lies in the same plane. Next question 27 number पे, the angle of incidence is dash to the angle of reflection. Right answer, equal. Question number 27, the angle of incidence is equal to the angle of reflection, equal. Next question 28 number पे, in SI unit of charge is. Right answer, coulomb. Question number 28, in SI unit of charge is. Right answer, coulomb. Next question 29 number पे, a device which is used to store charge is called. Right answer, capacitor. Question number 29, a device which is used to store charges is called. Right answer, capacitor. Next question 30 number पे, electric potential is dash quantity. Right answer, scalar. Electric potential is scalar quantity. Electric potential is a scalar quantity. Next question 31 number पे, the rate of flow of electric charge through any cross sectional area is called. Right answer, current. Question number 31, the rate of flow of electric charge through any cross sectional area is called. Right answer, current. Next question 32 number पे, SI unit of capacitance is. Right answer, farad, F. Question number 32, the SI unit of capacitance is farad, F. Next question 33 number पे, SI unit of current is called. Right answer, ampere, A. Question number 33, SI unit of current is called ampere, A. Next question 34, V equal IR is called. Right answer, Ohm law. Question number 34, V equal IR is called Ohm law. Next question 35, a device used in the circuit that senses temperature change is called dash. Right answer, thermistor. Question number 35, a device used in the circuit that senses temperature change is called thermistor. Next question 36, V equal V1 equal V2 V3 shows that resistors are connected in dash combination. Right answer, parallel. Question number 36, V equal V1 V2 V3 shows that resistors are connected in parallel combination. Next question 37, 1 kWh equal. Right answer, 36 multiply 10 की पावर 5 J, या
3.6 mj। तो ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना। 37 क्वेश्चन, 1 kWh इक्वल 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 या j और 3.6 mj। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्रीली मूव सो एज टू पास इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, राइट आंसर कंडक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 38, materials in which electron can freely move so as to pass electricity is called, right answer conductors। Next question 39, an electrical instrument which measures large current and always connected in series in a circuit is called, right answer ammeter। Question number 39, an electrical instrument which measures large current and always connected in series in a circuit is called, right answer ammeter। Next question 40 number, example of practical application of mutual induction is, right answer transformer। Question number 40, example of practical application of mutual induction is dash, right answer transformer। Next question, question number 1, positively charged particles are called dash particles, right answer alpha particles। Question number 1, positively charged particles are called alpha particles। Question number 2, high energy electrons are called dash particles, right answer beta। Question number 2, high energy electrons are called beta particles। Question number 3, electromagnetic question number 3, electromagnetic radiation of very short wavelength are called dash, right answer gamma rays। Question number 3, electromagnetic radiation of very short wavelength are called dash, right answer gamma rays। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज।